Hello everyone. A lot of students who come and meet me are often confused about US CMA and US CPA qualification. So I thought let me make this video and make it simpler for the larger audience. Both are top global finance qualifications, but which one is the right fit for you is what you need to make, especially if you are planning to work in India. Stick around. We are breaking it all down, be it the scope, salary, eligibility, difficulty, and even more about both the qualifications. Let's begin with a quick overview. The US CMA qualification, that is the US Certified Management Accounting qualification, is issued by the IMA US. It focuses on management accounting and strategic finance. The US CPA qualification, on the other hand, stands for Certified Public Accountant, issued by the AICPA, again US-based body. It focuses on auditing, taxation, financial accounting and regulatory compliance. So which simply means कि आपके लिए कौन सा better suited है depends upon what is your scope, what is the horizon that you are looking for your career. अब बात करते हैं what really matters, the scope of both the qualifications in India. USCMA in India is great for roles in FP&A, costing, budgeting, business strategy and management accounting. MNCs like Amazon, Accenture, Deloitte, Genpact, HP and others actively hire for US CMAs in India. The US CPA, on the other hand, in India if you're talking about, is perfect if you are eyeing roles in auditing, tax, assurance and compliance with Big Four. मतलब दोनों का स्कोप बहुत डिफरेंट है. अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो US CPA is the bigger umbrella and US CMA is a subset of the US CPA qualification. तो डिपेंड करता है कि आपको अपना करियर कौन सी स्ट्रीम और कौन से स्कोप के थ्रू बनाना है. US CPA में you definitely get jobs in MNCs and global based outsourcing companies and even US based clients who are working remotely from India. So if your interest lies in internal decision making and analytics, go for US CMA. If you love financial reporting, audit, law, CPA might be your calling. एक quick comparison अगर मुझे दोनों qualifications का करना हो, let me very quickly break it down for you. Focus area US CMA में रहेगा management accounting पे. US CPA पे रहेगा फाइनेंशियल एंड स्टैट्यूटरी अकाउंटिंग पे. सर्टिफाइंग बॉडी की अगर बात करूं तो CMA की सर्टिफाइंग बॉडी है IMA which is USA based. CPA की सर्टिफाइंग बॉडी है AICPA which is again US based. नंबर ऑफ एग्जाम्स को अगर कंपेयर करना हो, CMA has only got 2 parts. CPA में 4 एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे. ड्यूरेशन की बात करूं तो CMA 6 to 12 मंथ्स में स्टूडेंट्स कर सकते हैं और CPA में मिनिमम आपको 12 to 18 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे. बट व्हाट अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? CMA आप कर सकते हो इफ यू आर समवन हु फिनिश्ड ऑफ विद क्लास 12th एंड परस्यूइंग ग्रेजुएशन. CPA के लिए ऑन द अदर हैंड यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट with 150 plus credit hours on your back. वर्क एरिया की अगर बात करूं तो CMAs जनरली बात करते हैं या काम करते हैं कॉस्टिंग में, FP&A में, बजटिंग में. CPAs ऑन द अदर हैंड काम करते हैं ऑडिट, टैक्स, रिपोर्टिंग एंड दैट इज देयर कोर एरिया. डिमांड इन इंडिया की अगर बात करूं तो CMAs हैव हाई demand in MNCs and shared services. CPA की on the other hand have huge demand in Big Fours and US clients. अब सबसे important differentiator, CMA की salary in India starts somewhere around 6 to 12 lakhs per annum. Or CPAs on the other hand can start earning from 8 to 12 lakhs per annum
डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली आपका साथ में एक्सपीरियंस कितना है। ग्लोबल रिकॉग्निशन तो CMA की तो डेफिनेटली ऑन द हायर साइड है, बट CPA को मैं हाईएस्ट बोलूंगी। वाई? बिकॉज सिंपली इट्स लाइक द बिगर स्कोप, इट हैज बिगर स्कोप एंड द बिगर अम्ब्रेला लाइक आई एक्सप्लेन्ड। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू नोट, अगर आप CPA करना चाहते हो तो यू मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ अ US स्टेट बोर्ड इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें कई बार आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स लेने के लिए कुछ ब्रिज कोर्सेज भी हो सकता है करना पड़े। ऑन द अदर हैंड US CMA तो इज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, 2 ही पेपर देने हैं, 6 to 9 months में आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो इफ यू आर कंसिस्टेंट। US CPA obviously being more regulatory heavy, it takes somewhere around 12 to 18 months for you to finish it off, and it involves more legal formalities as well. So if you're a student or a working professional who wants a quicker entry into the corporate world, CMA might be more manageable for you. But listen carefully. Eligibility can be a deciding factor as well. So you must check on the eligibility criteria for both the qualifications. CMA तो आप after class 12 along with graduation आराम से शुरू कर सकते हो। CMA qualified होने के लिए you need to have work experience of 2 years, जो कि आप qualification के बाद में भी earn कर सकते हो। Added advantage of US CMA, किसी भी स्ट्रीम के अगर स्टूडेंट हो, चाहे 12th आर्ट्स से करी है, चाहे BCom मतलब चाहे कॉमर्स से करी है, यू कैन स्टार्ट विद योर US CMA if you are open for BCom, BBA और even engineering graduates. US CPA की एलिजिबिलिटी की अगर बात करूँ तो थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्ट्रिंजेंट है। ग्रेजुएशन मस्ट है, यू नीड टू हैव 150 आवर्स ऑफ क्रेडिट। इंडियन ग्रेजुएट्स ज़्यादातर इसमें थोड़ा सा फॉल शॉर्ट करते हैं, सो दे नीड टू डू सम ब्रिज कोर्सेज। However, some states require accounting background or post graduation studies as well. तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट इट इज डेफिनेटली वर्थ इट इफ ऑडिट इज योर गोल। तो अगर मैं इन समरी बताऊं, बोथ क्वालिफिकेशंस डेफिनेटली ओपन अप डोर्स इन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, वर्क फ्रॉम इंडिया, US related roles and global mobility. At the Wall Street School, we guide you from end to end, from eligibility evaluation to exam prep, licensing, whether you will be able to cope up with US CPA or maybe US CMA is what you should be looking for. Our classes, our offline classes in Delhi and Mumbai, our mentorship for both the qualifications will clearly give you a head start and you will be able to clear your exams in the first attempt itself. So finally, अगर एक summary, अगर एक मतलब final breakdown मुझे देना हो तो why choose CMA? अगर if you are someone who loves analytics, planning, decision making, want a shorter course, starting early in your career, then definitely US CMA must be your calling. But then you need to choose US CPA if you are someone who enjoy auditing, financial reporting, taxation, wants to work in assurance, global consulting, big fours, are someone who is willing to invest time for this global mobility, then definitely US CPA. Both the qualifications, in fact, US CMA and CPA can transform your career. The key is to choose based upon your interest, the timelines that you have in hand, and what is your ultimate career goal. If you still need some help in deciding, please connect with the team here at the Wall Street School and book yourself a one-on-one session with me, and I will make it very, very simple for you. So if you're ready, let's begin your global finance journey today itself. Till then, thank you so much. God bless.